It is the process of transfer of heat. It is the process of transfer of heat from one part of a system, to another part without actual motion of medium particles. Full stop. We consider a rod of length L and area of cross section A, the opposite faces of which are maintained at temperature theta 1 and theta 2. Theta 1 is greater than theta 2. Full stop. Since theta 1 is greater than theta 2, the heat will flow from X to Y, in the direction of fall of temperature. Because heat is temporarily falling from what? X to Y. ये टेम्परेचर बड़ा है बेटा, ये टेम्परेचर क्या बेटा छोटा है. Alright? So heat always flows from high temperature to low temperature, or we can say heat will flow in the direction of fall of temperature. Now see toward the blackboard below. The amount of heat flowing through any cross section of rod in time t is, number 1, directly proportional to area of cross section of rod, that is Q is proportional to what बच्चों? बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना हीट ज्यादा फ्लो करेगी. प्रैक्टिकली देखिए बेटा, आपके पानी का पाइप है, उस पानी के पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पानी फ्लो करेगा. तो इसी तरह बेटा जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज्यादा वाटर या हीट फ्लो करेगा. नंबर 2, डायरेक्टली proportional to
between two ends of rod, that is Q is proportional to theta 1 minus theta 2. बेटा इन दोनों एंड्स के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट उतनी क्या करेगी बेटा, जल्दी फ्लो करेगी, उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी. सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. नंबर 3, directly proportional to time for which heat flows. यानी जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी. Q is proportional to T, directly proportional to time for which heat flows. Students, inversely proportional to the length of, यानी कि Q is proportional to बच्चों what? रॉड की लेंथ जितना ज्यादा होगी हीट उतना कम फ्लो करेगी. क्यों? क्योंकि बेटा आप कितनी भी कोशिश कर लें, रॉड की सराउंडिंग से कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा. मान लीजिए आप इस रॉड को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से ब्रेक कर दो तो आप देखिएगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है. तो हीट विल फ्लो, बट साइड बाय साइड सम लॉस ऑफ हीट आल्सो टेक्स प्लेस. तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी हीट का लॉस उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा. और जब हीट का लॉस ज्यादा होगा तो यहाँ पहुंचने वाली हीट क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी. सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड. Therefore, Q is proportional to A theta 1 minus theta 2 T upon what? The amount of heat flowing is directly proportional to area of cross section, directly proportional to temperature difference, directly proportional to time, directly proportional to length. So inversely proportional to length. Therefore, Q is equal to K A theta 1 minus theta 2 into T upon what? L, where K is proportional T constant and it is called coefficient of thermal conductivity. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो ये हमारी क्वेश्चन आ गई बेटा. Q is equal to Ka theta 1 minus theta 2 T students upon what? L. Let A is equal to 1, theta 1 minus theta 2 is equal to 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Time is equal to 1 second. L is equal to 1 meter. तो Q क्या आ जाएगा बेटा? Q. Listen very carefully. Coefficient of thermal conductivity is numerically equal to the heat. Coefficient of thermal conductivity is numerically equal to heat. कौन सी heat? Flowing through a rod of length 1 meter, area of cross section 1 meter square in 1 second, when the two ends are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius. Coefficient of thermal conductivity is numerically equal to the heat flowing through a rod of length 1 meter, area of cross section 1 meter square in 1 second, when the two ends are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius. Thus, coefficient of thermal conductivity is numerically equal to the
heat flowing through a rod of length 1 meter, area of cross section 1 meter square in 1 second, when its two ends are maintained at temperature difference of when two ends are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius.